Hello बच्चों, let's see the question is the two end of the rod of length L and uniform cross section area A are kept at two temperature T1 and T2. T1 is greater than Q2. The rate of heat transfer dq upon dt through the rod is a steady state is given by, here the option A is dq upon dt is equals to k L T1 minus T2 upon A. Option B is dq upon dt is equals to k T1 minus T2 upon LA. Option C, dq upon dt equals to k LA T1 minus T2. And option D is dq upon dt is equals to ka T1 minus T2 upon L. ओके, तो देखो बच्चों, जो हमारा होता है ना थर्मल कंडक्टिविटी, सपोज करो कि कोई एक स्लैब है, कोई यूनिफॉर्म कोई एक स्लैब है, ये ठीक है, ये हमारा ठीक है, इसका थिकनेस हमारा कितना है, हमारे इसकी जो रॉड मतलब रॉड ले लेते हैं हम, रॉड से ज़्यादा सही है, तो हम इसका रॉड ले लेते हैं। एक रॉड ले ली। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है हमारी L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा A आया, और इसका एक साइड का टेम्परेचर T1 है और दूसरे साइड का टेम्परेचर T2 है, और हमें बोला गया है कि T1 का टेम्परेचर ज़्यादा है T2 से, ये हॉटेस्ट पॉइंट है और ये कूलेस्ट पॉइंट पोर्शन है। तो देखो एज वी नो दैट द एनर्जी डेल्टा क्यू ट्रांसफर इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फ्रॉम द हॉटर फेज टू द colder phase. So the rate of heat flow or heat current is directly proportional to, means the rate of heat flow यानी Q upon T यानी delta Q upon dt is directly proportional to the area, and the rate of heat flow is directly proportional to delta T upon delta T is directly proportional to the temperature difference theta 1 minus theta 2, and it is inversely proportional to the thickness यानी dq upon dt is directly inversely proportional to their thickness. Okay, now from these three equations we can write dq upon dt is directly proportional to a theta 1 minus theta 2 upon L. Now we use dq upon dt is equals to ka theta 1 minus theta 2 upon L, where k is the constant coefficient of thermal conductivity of material of rod. Okay, so it is the required answer dq upon dt in steady state the rate of heat flow dq upon dt is equals to ka theta 1 minus theta 2 upon L. Now let's check the option. Option A is dq upon dt kl t1 minus t2 upon a, that is the wrong answer. Option B dq upon dt k t1 minus t2 upon la, that also is the wrong answer. Option C dq upon dt is equals to kla t1 minus t2, that also is the wrong answer. And the option D is dq upon dt is equals to ka t1 minus t2 upon that, that is the correct answer. So the correct answer is option D for the required question. Best of luck.